Assalamualaikum everybody, my SRC colleagues, council member for Assam, and all of the committee members who are joining us today live as well as online. So I think this is a very relevant topic which has been today discussed, because we keep hearing about the brain drain that is taking place, and a lot of people looking for opportunities to move abroad and to move for better economic opportunities. So I compliment Sama Rashid, my SRC for arranging this. And if I could not have इसकी वजह से मेरे ख्याल से वी आर लैगिंग बिहाइंड फोल्ड। मैंने कनाडा में भी काफ़ी आइडिया थ्रो करने की कोशिश किया, वाई डोंट वी वर्क टुगेदर। तो हर एक बंदा अपनी प्रैक्टिस लेके बैठा है, दे आर डूइंग गुड जॉब, 2-3 लाख डॉलर्स की है वो, बट इफ दे हैव इफ दे सिनर्जाइज दे वुड बी मिलियंस। वो टॉप 10 फर्म में आ सकते हैं कनाडा में फॉर एग्जाम्पल, बट दे आर वर्किंग इंडिविजुअली। वो बात है, आई थिंक दैट्स द मेन रीजन। बाकी और बहुत सारे रीजन भी हो सकते हैं, और वो आप कई चीज़ों को ब्लेम कर सकते हैं, बट लेट्स स्टॉप ब्लेमिंग द सिस्टम्स एंड द प्रोसेसेस, लेट्स स्टार्ट वर्किंग टुगेदर। वो हम कर सकते हैं। लेट की बात हो रही है, इफ़ आई बी स्पेसिफिक, अकाउंटिंग सर्विसेज हम वी आर लेट एटलीस्ट 10 to 15 years। अच्छा, अब किया क्या जा सकता है? ऑफ कोर्स इफ आई एम टेलिंग द प्रॉब्लम आई नीड टू गिव अ सोल्यूशन टू दैट। हम जो मर्जी इंडस्ट्री ले लें, आई डोंट वांट टू एक्सपैंड ऑन दिस, जो मर्जी इंडस्ट्री ले लें, एयरलाइन, स्टील मिल्स, टेलीफोन इंडस्ट्रीज, कई अकाउंटेंट्स ने खुद देखा है इधर जो ऑडिट करते हैं, वी डोंट इनोवेट, वी डोंट कीप अब्रेस्ट विद द चेंजेस एंड वी डोंट सी द चेंजेस कमिंग। हमने इन सारी इंडस्ट्रीज़ में इनोवेट नहीं किया। हम एयरलाइंस को सिखा रहे थे कभी बैठकर, कब हमारी भी एयरलाइंस को डूब रही है। टेलीफोन इंडस्ट्री हमारी टॉप नॉच होती थी, जब डिजिटल एनालॉग से डिजिटल पे आए उसके बाद हम फेल होना शुरू हो गए। तो हमने अब क्या करना है, अभी फाद ने रियासत में बहुत अच्छी बात की, AI इनोवेशन जहाँ जहाँ हो रही है, लेट्स स्टार्ट टैपिंग इनटू इट। अभी से करेंगे, इनोवेट करेंगे, और अब वो सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू करें जो बहुत कम लोग प्रोवाइड हो रही है। बुक कीपिंग, काउंटिंग ठीक है, सैचुरेशन मैनी में हो गई, मगर कई हद तक हो गई है। बड़ी बड़ी कंपनीज उन्होंने एक्वायर कर ली है, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, बिग 4 फर्म, ज़्यादा करने पड़ते बस। तो यू स्टार्ट गिविंग अ कॉम्पिटिटिव एज टू द वर्ल्ड। सो वो अगर स्टार्ट करें बंद करना, तो स्काई इज द लिमिट। आप वही बिलियंस पे जा सकते हैं इकॉनमी वाइज, और वही बात है कलेक्टिव थॉट। तो आई होप आई एम नॉट ओवर स्पोकन अबाउट दिस। No, that's very good, being upfront and straightforward, because I hope that will help us in developing a collective thought and collective, responsibility as a nation. So I can add something. Yes, sure, why we please are do. lagging behind Yes, that. yes. The first thing is that there is a very limited awareness amongst our accounting fraternity, the potential of this international market. Fahad has just shared the number, and it was shocking news for everybody sitting here, I think so. And as I said earlier, certain specified trainings and certifications are required to promote we are capable and competent to serve that market. So here we are lacking, and our competitors in every country are ahead of us. Lack of marketing and promoting Pakistan as a brand, Pakistani accountants as a brand, which is also lacking, and here we need the support from the embassies of the government of Pakistan sitting over there, their commercial attaches and business advisors as well. So here we are lacking too. And in Pakistan, there is a lack of IT structure and data security issues. These are also lacking. Those who are working as a freelancer at a very small level, they need to take care of it. In March, I think there was a power breakdown in Pakistan, and the American market and the customer, they can't believe it. Okay, we could not work for 8 to 10 hours, and suddenly that shatters their confidence. You cannot serve like that in this advanced global village. So you have to, as some of us said to you, that you probably further said, that you need to take care of that you have a backup of everything. If the electricity fails, there has to be a building generator or your office generator. There has to be UPS installed, and there has to be some other mode where you can secure the electricity at the point it goes down. And then you have multiple layers of internet connections, both shared and dedicated, just to that
just to confirm that there not be a single minute lag of providing the online or real-time service, and that we have managed, alhamdulillah, at the BPO because of all these infrastructure. Not a single second at that time was missed by our customers who were sitting in the North American market. So if you grow, you have to take Yes. care of all these. Yeah, I think that's contingency planning. I think they Yeah, really yeah, need to look yeah. into if they are going to venture into an international arena. Danish, what would your thoughts be regarding the quality, reliability, and timely delivery of services, of our people compared to the neighboring country? आई थिंक क्वालिटी रिलेटेड थोड़ी सी डिस्कशन तो वी हैव डन कि प्रयास साहब ने बताया कि टेक्निकली दी आई कैब अकाउंटेंट्स और पाकिस्तानी अकाउंटेंट्स आर वेरी वेरी गुड. लेट मी डाइसेक्ट दिस क्वालिटी एरिया इज वेरी टू साइड्स. एक हार्ड स्किल्स हैं, एक सॉफ्ट स्किल्स हैं. हार्ड स्किल्स के अंदर भी वी कैन मेक अ गुड डिस्कशन कि जी एक कोर एरिया और एक सपोर्ट. तो कोर एरिया की तो डिस्कशन कर दी IFRS टेक्निकली वी आर वेरी साउंड. बट जिस भी रीजन में आप जाते हैं उसका एक अपने लॉज और रेगुलेशन है. हर जगह पे जो अकाउंटेंट्स काम करते हैं अपनी लिंगो है, लेकिन वो सॉफ्ट चीज़ें जो है वो आपको सीखनी ज़रूरी है. इफ़ यू गो टू नॉर्थ अमेरिकन मार्केट, इस तरह से टैक्सेशन की बात करें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ हूँ तो मैं और आप बात करेंगे टैक्स IRS पे जब फाइल करते हैं, तो बट उनका IRS क्या है यू शुड नो होता है एज एन सर्विस प्रोवाइडर जो स्टार्ट कर रहे हैं. इसी तरह अगर मैं कहूँ कि इलेक्ट्रिक का बिल तो इलेक्ट्रिक आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर है, ठीक है. इसी तरह वहाँ पे भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो ये सारी चीज़ें आपको जो स्टार्ट करें उनको ये सारी चीज़ें जो है वो अंडरस्टैंड करने की सीखने की ज़रूरत है. कोर्स है वैसे इसके अंदर भी जो स्टार्टअप से बढ़ के यानी इंडिविजुअल से बढ़ के टीम जनरेट कर रहे हैं उनके अंदर भी एक लर्निंग एंड डेवलपमेंट का फंक्शन बहुत ज़रूरी है कि पीपल कम एंड पीपल गो एंड पीपल आर द ट्रू एसेट्स इन द सर्विस इंडस्ट्री. ठीक है, उन लोगों को आपने ट्रेन करना है, बताना है, ये सारी चीज़ें जो है वो क्वालिटी के एस्पेक्ट से हमें इंक्रीज़ करनी है अपनी. बिकॉज आपकी जो नेबरिंग कंट्रीज है दे हैव कलेक्टिव एक्सपीरियंस क्वाइट मोर देन योर्स. ठीक है, इंडिया की बात करें, फिलीपींस की बात करें, दे स्टार्टेड मैनी ईयर्स बिफोर वी हैव डन. वो जो उनके पास कंबाइंड नॉलेज है, जैसे रियासत ने भी कहा कि शेयरिंग ऑफ नॉलेज और ये सारी चीज़ें वहाँ पे ज़्यादा हैं. वी ऑल नीड टू लर्न ऑल दिस. देन कम्स द सॉफ्ट स्किल साइड. इसमें स्पेसिफिकली कम्युनिकेशन है. बिकॉज योर क्लाइंट इज सिटिंग इन नॉर्थ अमेरिका, तो ओनली चैनल इज यू आर स्पीकिंग टू देम. ठीक है, लैंग्वेज बैरियर सबसे आपने जो है वो फ्लुएंसी उसके अंदर लेकर आनी है. नॉट ओनली इन स्पीकिंग बट ऑल्सो इन राइटिंग प्रपोजल्स और सबमिटिंग योर रिपोर्ट्स. और उनकी एक्यूरेसी ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़रूरी है. रिलायबिलिटी और टाइमलीनेस के हवाले से आई शेयर माई एक्सपीरियंस वर्किंग विद accountants of other regions as well. We are similar to them, but थोड़ा सा I think the nature of our accountants and our mindsets of accountants Pakistan and the nature of people in other regions उसका भी एक बड़ा डिफरेंस है. ठीक है, इंडिया की अगर आप मेंबरशिप देख रहे हो तो तकरीबन जो है वो 3.5-4 लाख की मेंबरशिप है अकाउंटेंट्स की. हमारी जो है वो 10-12 हज़ार हैं. तो वो भी एक बड़ा फ़र्क है उनके अंदर. दे आर मोर सबमिसिव टाइप नेचर ऑफ द पीपल. तो उसके हिसाब से जो है वो प्लीज़ बड़ा जल्दी कर लेते हैं अपने कस्टमर्स को. ये सारी चीज़ें जो है वो हमें सीखने की ज़रूरत है. हमारी गर्दन में सरिया है थोड़ा. आई वुड नॉट से थोड़ा ऑन अ लाइटर नोट. लेकिन ये कि ये वो चीज़ें हैं कि जो आप अपने जगह क्योंकि कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है, आपने अपने कस्टमर को जहाँ से विन करना है उसको मेंटेन भी करना है. तो मेंटेनिंग द कस्टमर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे रियाज साहब ने बताया, फाद ने बताया कि इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी है, बिजनेस तो बहुत बड़ा. ऐसा लगा था जी बस मेहनत करनी है और बस बिजनेस है. विनिंग बिजनेस ज़्यादा मेंटेनिंग बिजनेस जो है ना वो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इस वजह से रिलायबिलिटी, टाइमलेस फैक्टर, बैकअप्स, इंटरनेट, ये सारी चीज़ों को जो है वो काम करना बहुत ज़रूरी है. देन मैं एक नहीं कहूँगा जो स्टार्ट करना चाहते हैं ये सारी चीज़ें सुनने के लिए बहुत स्कैरी है, जो है वो अपने क्लास लगता है. लेकिन इसके अगर आप बैठ के इसको प्लान कर लें सही तरीके से, या अपने पीयर्स के साथ जो पहले से काम कर रहे हैं उनके साथ अगर आप डिस्कशन कर लें, दिस थिंग्स गेट्स वेरी ईजी, मच मोर डूएबल. एंड आई थिंक इन टर्म्स ऑफ अगर थोड़ी सी मेहनत करें क्वालिटी और रिलायबिलिटी के अंदर, वी आर वेरी मच इन द कॉम्पिटिशन विद एनीवन इन द वर्ल्ड.
So I believe the tagline is know your customer basically. You Absolutely. need to have KYC about your customer. Yeah. Okay, so we've talked about legal setup, the scope of services, the opportunities. Now let's come to the challenges. So Riaz, what challenges do you think are, specific to this market, especially operating from Pakistan? And if you could also cover, because IT has become so prevalent in all our business transactions. As I already said, the IT infrastructure and security protocols need to be enhanced because this is very dear to the heart of the North American customers. I have already talked about the branding and promotion of Pakistani accountants and their capabilities. Third thing which came to my mind that it is a challenge for the SMP is the very high cost of licensed softwares, particularly for the SMPs. If you go for MS Office and then you have to put all the firewalls and antiviruses, these are costly affairs, and SMP may face a huge challenge in the wake of the depleting value of Pakistani rupee. It's huge for them. So this is a challenge for them. So therefore, to fix that, I think what can a government can do in this respect, for the startups at least, I think that needs to be pondered. The another thing is that we are facing acute shortage of accountants. We want to hire more, we have more work, but we can't find them in the market. Now, there are various factors behind that. The brain drain which is going on from Pakistani chartered accountants, ACCAs and CIVAs, they are going abroad for their better prospects. So that's maybe one of the reasons. The another reason is we are not producing as much as accountant as the Indians are producing. So that's why they are 400 to 500,000 and we are just 11-12,000. And out of 11-12,000, 6 to 7,000 are abroad. So what do we have left to serve and cater to the North American huge market of $400-500 billion? So we need accountants. Here I am not propagating that we only employ, I am including all sort of accountant, whether we are CIMA or MBA finance or ACCAs. We have employed every accountants from all these institutes because we could not find 170 chartered accountants or even we can't afford to do that as well. So this is one of the issue. We are finding it very difficult to have the skilled and trained resources. The another dilemma of our market, there are thousands of service providers who are providing accounting services in Pakistan. Must be more than 1,000, but they are operating on a very small scale. They have not grown over the time. They are still working as a sole proprietor and employing only 3-4 people or 5-6 people, and that's their bread and butter, and they are happy with that. They need to consider to join hands with other partners, make a work as an institution, make an institution that will give a huge growth, which is a case with the BPO, and it's a trial and tested case. So these are the challenges we are facing. I guess where there is a will, there's a way. So I think these challenges can also, they can easily be surmounted. So it would not be so much difficulty for our accountants to, ace that. So we have a list of questions from our online participants. I think we reached more than 180 participants online, and there are certain questions that they have posed, and they are very patiently, I think, waiting for answers. So if I can now, address those. Mr. Asim Rashid, who joined us online, he has a question which says some clients ask for indemnity insurance cover against the services accountants perform. How can we overcome that? Because no company in Pakistan is providing indemnity insurance to foreign clients. So this is open to any of the panelists who would like to answer. So Canada में there is something called errors and omissions. वो मिल जाती है. It's not that expensive. वो it's up to $1 million. I think you need to pay $25 to $30 for that.
तो कोई भी प्रोफेशन जैसे मॉर्गेज एजेंट आपने बनना है, इंश्योरेंस का एजेंट बनना है, चले यार दैट ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सिर्फ अकाउंटिंग नहीं कि यहाँ पे कई लोग बहुत आसानी से कुछ लाइसेंसेस ले सकते हैं इफ़ यू आर रेजिडेंट स्पेसिफिकली, तो आप वो लाइसेंस ले सकते हैं मॉर्गेज एजेंट का, आप ले सकते हैं इंश्योरेंस का लाइसेंस। इट डज नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट एंड इवन मनी। वो अगर आप देखिए, अगर आपके पास परमानेंट रेजिडेंस है इधर की कनाडा की, यू कैन स्टार्ट प्रोवाइडिंग दो सर्विसेज इवन अगर आप दूसरे से मार्केटिंग सही तरह से कर सकते हैं तो दैट विल हेल्प यू अर्न वेरी क्विकली ऑल्सो। वो एरर्स एंड ओमिशंस ई एंड ओ के नाम लिखा है, एरर्स एंड ओमिशंस वो लाजमी है कई सर्विसेज प्रोवाइड करें। Okay, so Asim has another question. Oh, Fahd, yeah, you'd like to add? ये सॉरी जस्ट टू ऐड, क्योंकि ये बड़ी कॉमन रिक्वायरमेंट है लाइबिलिटी इंश्योरेंस या इंडेमनिटी इंश्योरेंस लेने की इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में। तो जिसमें दोस्त ने सवाल किया कि दैट मीन्स कि आपका बिजनेस अभी इतना ग्रो कर रहा है कि दैट नाउ यू नीड अ प्रेजेंस इन योर मार्केट, जहाँ आप इस्टेब्लिश करें एक कंपनी ये इंश्योरेंसेज ने, बिकॉज एंड द रीज़न बिहाइंड दिस कि जी वहाँ पे कोई उसका सोर्सेज सारी जाके ये मिलती है कि हाँ कोई लीगल ब्रीच या कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच आप करते हैं, सो दैट जो कस्टमर है उसके पास ये एक जो है वो रिकोर्स होता है कि वो आपको जो है वो कैचअप कर सकता है, और आपके पास भी जो है एक डिफेंस है कि जी अगर ऐसी कोई गलती हो गई तो ये ना हो कि आप लीगल सूट के चक्कर में आप जो है वो दिवालियाँ निकल जाए और आप बंद हो। तो दोज इंडेमनिटी इंश्योरेंसेज और लायबिलिटी इंश्योरेंसेज देन हेल्प्स यू टू कम आउट ऑफ दिस सच सिचुएशंस। So this is also an important, I think, requirement. So Asim Rashid has another question actually. He says North Americans have more automated systems than Pakistan. So there comes the technology gap. We are providing accounting services in a traditional way. They expect AI integrated apps to be used rather than MS Excel. So how do we face or cope with this dilemma? Asad, would you like to answer that? अच्छा ये एक मिथ है लोगों से सेट रही है क्योंकि हम समझ रहे हैं पता नहीं कौन सी टेक्नोलॉजी चल रही है, AI हो रहा है। ये टोरंटो का कुछ एरिया है जहाँ पे some of the company have this very automated sort of systems। अब जो वेस्ट में जाते हैं टोरंटो से, बिलीव यू मी, मैंने अपने फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन तो मैंने कहा वेयर वी वर 25 years चेक सारा कुछ मैनुअल था, तो वो भूल जाएगा कि ये मिथ है कि दे आर वेरी ऑटोमेटेड और even honestly I don't want to share confidential information, जो ग्लोबल कंपनीज मैंने कहा they have that E&A with Excel। हालांकि बड़े बड़े ऐसे सिस्टम लगाए जो उसका फोरकास्टिंग सिस्टम बजटिंग सिस्टम है, that is filed up on the basis of project accounting। तो ये मिथ है, ये बहुत बड़ी है। think of जब तक लेवल I totally agree with you. It's a myth, and we are very competent when it comes to the use of technology. Even in the technology side, आज के ज़माने में there is nothing, कोई चीज़ सीक्रेट नहीं, जो टूल्स नॉर्थ अमेरिका के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो आई एग्री कि ऐसा कुछ भी नहीं कि वहाँ सारा कुछ ऑटोमेटेड है। अच्छा, खास तौर से जो फाद ने बात की कि स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को जब आप सर्व करने जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको ऐसी बहुत बड़ी खिलत है जो एक्सेल के ऊपर काम कर रहे हैं, बट इवन वो टूल्स यूज़ भी कर रहे हैं तो आज वो टूल्स आप भी कराची में बैठ के जो है वो बहुत आराम से सीख सकते हैं। कोर्सेरा का जिया फाद ने बताया, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जिसमें आप बड़ी आसानी से बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में इन्वेस्ट करके सीख सकते हैं। पॉइंट सिर्फ ये है कि हमें अगर ये काम करना है तो हंगर फॉर लर्निंग इज़ अ रिक्वायरमेंट। आपने अपग्रेड करना है अपने आप को, नए टूल सीखने हैं, नई लैंग्वेज सीखनी है, नए रेगुलेशन आते रहेंगे, लॉज आते रहेंगे, सारी चीज़ें होती रहेंगी। इफ़ यू हैव दी हंगर टू लर्न एंड सर्व तो ही आप बेहतर करेंगे, और इसी तरह आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी मिलेगा। जब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो यू हैव टू हैव योर ओन यूएसपी। जब आप यूएसपी क्रिएट इसी तरह करेंगे जब आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे, थोड़ी सी चीज़ें सीखेंगे और फिर उसको कस्टमर को ऑफर करेंगे। So that myth seems to be broken today. It seems to be busted. Yes, Asad, you want to add? हमें जो चीज़ सीखने की ज़रूरत है तो एक कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन मेरी बहुत क्वालिफाइड अकाउंटेंट्स
ऑनेस्टली देखें तो मोमेंट दे स्टार्ट टॉकिंग तो बड़ा प्रॉब्लम है। तो कनाडा में पता नहीं कि बहुत ही ज़्यादा इधर कम्युनिकेशन स्टाइल ही डिफरेंट है। यू विल नेवर सी द प्रोफेशनल एनवायरनमेंट समबडी टॉकिंग नेगेटिव इवन इफ यू आर सर्विस प्रोवाइडर। बहुत कम ऐसे क्लाइंट हैं जो बिल्कुल आप पे ना उन पे नेगेटिव की बात करें, वो आपको छोड़ देंगे मगर नेगेटिव बात नहीं करेंगे। इवन जॉब मार्केट में मैंने कितने एक्सपीरियंस अकाउंटेंट्स को ये कहते देखा इवन क्लाइंट्स कमिंग फ्रॉम देयर कि तो then I started asking them, is this happened? Did you say that? Did you try to do this? Yeah. तो देखो वो कम्युनिकेशन के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और अकाउंटिंग फाइनेंस के लिए देखो मगर ये कम्युनिकेशन हमारा बहुत ज़रूरी है। Unless you were groomed or trained in big four, आपने खुद आप लोग या कॉलेज का एक्सपीरियंस अच्छा था, हमारा कम्युनिकेशन इन दैट था। दैट्स वन। दूसरा लीडरशिप स्किल्स, जैसे हम मिड ईयर लेवल पे रहते हैं ऊपर नहीं जा सकते मास्टर की मार्केट उसका उनको हम कस्टमर ठहरा सकते हैं वो रेस उसमें जो करती हैं। बट इफ वी हैव दैट लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन स्किल, आई हैव सीन दोस पीपल हैव दोस स्किल्स गेटिंग अप द लेवल पे। So you are sitting in the market which people are trying to like approach and try to propose the services. So when we compare actually when you come and look at internationally like you compare with different countries. So a specific perspective actually comes in that Pakistan and their accountants are lagging behind. So why do you think is there this perspective that we are lagging behind providing services compared to other religious players? And how late are we establishing such a business opportunity? I'll be very specific for that. Collective thought as such में ज़्यादा नहीं है। हमारे यहाँ इंडिविजुअलिज्म है, सपोर्ट स्ट्रक्चर हमारे लीडर्स का बहुत अच्छा है। उनका सपोर्ट स्ट्रक्चर tremendous. मैं एजुकेशन इंडस्ट्री में रहा, I saw them bringing in students 10,000 और हमारे एक्सपीरियंस होते थे 2-4 So एक collective thought जैसी होती है वो हमारे यहाँ लैग करते हैं। ये that has to be driven, but individual mindset है। मुझे क्या बनेगा, मेरा क्या बनेगा, तो मुझे क्या बनेगा। जब तक ये collective thought नहीं आएगी, we cannot progress करनी। आप डिस्कशन करने जा सकते हैं, मगर we have to develop that। सबसे पहले ये जब हम डिजाइन समझ के आते हैं कि तो ये बड़ा स्पेशलाइजेशन क्रिएट करते हैं जब हम क्रिएट करने की बात करते हैं। So I think that definitely does bust the myth of technology being required for such execution. Asim, I hope you've got your answer. Then we have Ebrar Ali, who is talking about saying it's a major difficulty in winning clients. Execution of the project is not difficult for a chartered accountant. Please elaborate what approach should be adopted to start winning clients practically, especially for those who are new to such services. And if I can club a few other questions also because I think they also pertain to something similar. Mohammed Ayub is asking what is the route to enter into global markets online, and Tariq is asking how can we have a contact data like email addresses, WhatsApp contact numbers of clients that we can contact them for business development, and secondly what sort of digital marketing platforms are beneficial in these countries. Like I think because you did cover it somewhat in your presentation, so if you could. I don't want to expand on this. जो मर्जी इंडस्ट्री ले, एयरलाइंस, ईमेल्स, टेलीफोन इंडस्ट्रीज, कई अकाउंट्स जिनको देखा है जब ऑडिट करते हैं, we don't innovate, we don't keep abreast with the changes, and we don't see the changes coming. हमने इन सारी इंडस्ट्रीज में इनोवेट नहीं किया, हम एयरलाइंस को सिखा रहे थे कभी बैठ कर हमारी एयरलाइंस को टेलीफोन इंडस्ट्री हमारी टॉप नॉच होती थी जब डिजिटल एनालॉग से डिजिटल पे आया उसके बाद हमने तो हमने अब क्या कर रहे हैं अभी बाद में रियासत की बहुत अच्छी बात की एआई इनोवेशन जाना हो रही है लेट्स स्टार्ट टैपिंग इनटू इट अभी से करेंगे इनोवेट करेंगे और आप वो सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू करें जो बहुत कम लोग प्रोवाइड होती है कंपनी ठीक है सैचुरेशन मनी को होकर 3 साल तक हो गई बड़ी बड़ी कंपनी इन्होंने एक्वायर कर ली माइक्रोसॉफ्ट IBM बिग फोर तो यू स्टार्ट गिविंग अ कॉम्पिटिटिव एज टू द वर्ल्ड तो वो अगर स्टार्ट करें तो करना उस टाइम में कोई बिलियन पे आ सकते हैं इकोनॉमी और पूरी बात करेंगे आई होप आई नॉट That's very good to be upfront and straightforward because I hope that will help us in like developing a collective thought and collective responsibility as a nation. So I think that's yes. What we are taking, you mentioned regardless
thing is that there is a very limited awareness amongst our accounting fraternity the potential of this international bond. Father just shared the number, and it is shocking for everybody setting up the things. And as I said earlier, certain specified trainings and certifications are required to promote we are capable and competent to serve them. Here we are taking a step in our competitors are ahead of us. Lack of marketing and promoting Pakistan as a brand. Pakistani accountants as a brand, which is also lacking, and here we need support from the embassies and translating their promotions are business advisors. So here they are taking two. And in Pakistan, I think that's a very useful suggestion, because that would just lead to even if he does not give you business, he would definitely recommend you to others. So I think that's a very useful suggestion. Yeah. those who are working with freelancers at a very small level, they need to take care of it. In March, I think there was a power breakdown in Pakistan. The American market as a customer, they can't pay. It could not work for 8 to 10 hours, and suddenly that shatters confidence. You cannot serve like that in a global village. So you have to, as someone said to you, that you probably further said, Very useful. take care of it, backup of everything. True, very true, and very useful as in fact. Okay, so we have Abdul Rahman online who says that currently there has been a rapid brain drain from Pakistan, especially related to accountants. What is your stance in this respect, and how does it affect the export of services from Pakistan? As would you like to take that up? It's already been disbanded. That's the challenge, and we need to produce more accountants. That's the only way. Especially the statistics also that you quoted. 1000 लोगों को पास कर देना यार. तो इसमें एक और चीज़ है, मैंने पिछले चंद सालों में देखी और मैंने काउंसिल मेंबर से भी बात की थी. वी शुड स्टॉप बैटलिंग फॉर हमारे के साथ कॉम्पिटिशन में आना. बेसिकली डिफरेंट और टिप्पा कुछ और कर रहे हैं. Why don't we, collaborate with them to create some multi and qualification? हमारे के साथ एम्प्लॉइज को देते हैं, की कॉम्पिटिशन आ जाता है. Rather than doing that, let's collaborate with them. काफ़ी लोग उधर जा रहे हैं, उसको भी बेसिकली एक 11th जनरेशन का अपॉर्चुनिटी होता है कि आज करते हैं. तो उससे फिर यह है कि स्टूडेंट्स और भी आएंगे तो बड़ा स्ट्रीम या पोर्टफोलियो बहुत बढ़ जाए. I think we should concentrate on that part rather than saying, ये वाला गलत कर रहा है, ये गलत कर रहा है. इसे छोड़ दें. Let's collaborate. I would say. Again, I would Great. So the next question is from Umar Ansari, and he's saying, do we require any local certification to provide professional services in USA and Canada? I think this was partly dealt with. And can I just club it with another question from Vakas, who says, can you specify some courses and where to enroll in those courses? Fahad, would you like to add to this? इसी तरह अगर मैं इलेक्ट्रिकल बिल तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर इसी तरह वहाँ पे भी बहुत सारी ये सारी चीज़ें आपको जो स्टार्ट कर रहे हो उनको ये सारी चीज़ें जो है वो अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है. कोर्स है इसके अंदर भी जो स्टार्टअप से बढ़ के इंडिविजुअल से बढ़ के जनरेट करने के अंदर भी एक लर्निंग एंड डेवलपमेंट का फंक्शन होना ज़रूरी है. पीपल आर द टू एसेट्स इन द सर्विस इंडस्ट्री. उन लोगों को आपको ट्रेन करना है. ये सारी चीज़ें जो है वो क्वालिटी के एस्पेक्ट्स में इंक्रीज करनी होती है. बिकॉज आपकी जो नेबरिंग कंट्रीज है दे हैव कलेक्टिव एक्सपीरियंस क्वाइट मोर देन योर्स. इंडिया की बात करें, फिलीपींस की बात करें, दे स्टार्टेड मेनी इयर्स बिफोर वी आर हियर. वो जो उनके पास माइंड नॉलेज है, जैसे तरीका शेयर ऑफ नॉलेज, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा है. वी ऑल नीड टू लर्न ऑल दिस. Then comes
sources side, इसमें specifically communication. Your client is sitting in North America, only channel is you are speaking to them. Language barrier not only speaking but also writing proposals or submitting your reports or the accuracy is such that reliability or timeliness always if I share my experience with accountants or other things as well. It's similar to them. But it also depends the farmer कि किस टाइप ऑफ सर्विस आप देना चाहते हैं. अकाउंटिंग सर्विसेज के अंदर भी अगर मैं लो हैंगिंग फ्रूट्स की बात करूँ कि आप फॉर एग्जांपल पेरोल सर्विसेज देना चाहते हैं, टैक्स रिटर्न्स की सर्विसेज देना चाहते हैं, HST GST वैट रिटर्न्स को देना चाहते हैं, इन सब चीज़ों के लिए भी जो है वो कोर्सेज मौजूद हैं. यानी अगर आप पेरोल सर्विस देना चाहते हैं यू टू नो द पेरोल कंप्लाइंसेज, क्या क्या कंप्लाइंसेज करनी है, कौन सी चीज़ें किस तरह से डिडक्ट होंगी, इन सब चीज़ों की कोर्सेज अवेलेबल. आई डोंट रिमेंबर द प्लेटफॉर्म बट आई कैन शेयर दैट प्लेटफॉर्म. इसी तरह टैक्स सीखने के लिए प्लेटफॉर्म मौजूद है. अगर आप कहीं भी अकाउंटिंग कर रहे हैं ये छोटी छोटी साइंसेज अटैच होती हैं. ये तो वैट रिटर्न आपको देखना है, पेरोल उसका देखना है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप जो है वो जितनी जल्दी ये चीज़ें सीख लेंगे तो उससे दो बेनिफिट हैं. तो एक कि आपकी ऑफरिंग्स बढ़ जाएंगी, दूसरे एक कि आप सेम लिंगो बोलना शुरू कर देंगे. तो जो कंप्लाइंसेज है, जो डिडक्शन करते हैं वो उसी लिंगो में जब आप उसको कस्टमर से बात करेंगे तो ही हैज़ द कॉन्फिडेंस कि ही नोज द एनवायरनमेंट, ही नोज द इंडस्ट्री, he knows all the legal requirements. So Winning business, maintaining business. Would you like to add, Rehan? Very little bit. They are absolutely right. There is no one course available for all sort of outsourcing services which I have shared with you. You have to structure yourself in the niche of the practice. But if somebody is expert in accounting and reporting and bookkeeping, so let it be the specific course for that. And then for that, there is no need to do any course other than the chartered accountant. But if you want to specialize in the IT field and you want to be an accountant, you also want to provide software implementation support services or penetration testing or IS audit, so then you have to be specific and go for those sort of courses. If you want to be a valuation expert, then you must go and learn what is being taught in the CFA to become a certified valuer. So you have to choose and pick, and where your inclination is, you go for that course. You need to branch out into the field Yes. that you are targeting. So the next question is from Vakas, and he says, how do we learn the taxation requirement of the North American market? And Fahad Perez also has a similar question. He says every client would be requiring tax services in bookkeeping. How can this requirement be catered to? नहीं ऐसा नहीं है. देखिए it's not necessary that every client requires tax and accounting under one bundle. Again ये वही बात है, self rejection वाली बात है. उसको नहीं करें, इस तरह नहीं सोचें. आप सिर्फ accounting services देंगे वो भी मिल जाएंगे. हाँ, taxation आपने सीखनी है, not a big issue, क्योंकि यहाँ पे almost all of the software यानी tax returns are driven through softwares. तो एक दो सॉफ्टवेयर के अंदर आप इन्वेस्ट कर लेंगे, वो भी कोई बहुत ज़्यादा exorbitant cost नहीं है उसकी. वो सॉफ्टवेयर ही बेसिकली आपको पूरा गाइड करेगा कि कैसे करना है. उसी में आपको ट्यूटोरियल्स भी मिल जाएंगे, पूरे कोर्सेज उसके अंदर अवेलेबल है, जैसे कैन टैक्स है, यू फाइलिंग सिस्टम है, एंड-टू-एंड का टैक्स बुक्स है वो. और इसकी एंड दिस इज़ नॉट लाइक प्रिविलेज्ड इन्फॉर्मेशन. ये तो ऑनलाइन आप जाएंगे, कैनेडियन टैक्स सॉफ्टवेयर, US टैक्स सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएगा और वहाँ से आप सारे कोर्सेज भी कर सकते हैं. यू कैन ऑफर दोज सर्विसेज. हाउएवर अगर आप जैसे स्टार्टअप फेज में हैं, अभी इनिशियल फेजेस में, आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड कि जो लो हैंगिंग फ्रूट है उसको टारगेट करें. अकाउंटिंग सर्विसेज को जो आपका इजी टू डिलीवर, इजी टू सेटिस्फाई द कस्टमर वो है, उसको करें. एंड मे बी टैक्सेशन को फॉर लेटर ऑन छोड़ दें कि बाद में जाके आप इसको करेंगे. दैट वुड बी अ मोर प्रूडेंट अप्रोच. Would anybody else like to add to it? I think it's covered more or less, yeah. So amongst the list of questions from our male participants, finally we have a female asking a question online. It's Amna Saeed who says, can you please elaborate regarding internal audit services, as SMEs usually do not require such services. How can we target such internal audit services? Well, as
Fahad stated, the size of the medium-sized company in US and Canada ranges around $50 to $100 million. And $50 to $100 million, when you convert in rupees, it turns into the billions of rupees, and that's the top 5 companies of Pakistan. So they do have the requirement to do the internal audit, where we can either provide the technically trained internal auditors as a resource, or we can take over the whole for the small or medium size, which has around 40 to 50 staff and 5 to 10 finance people. They also require the internal audit services. So where we can take over the internal audit work on ourselves, rather than they employ and set up a full-fledged internal audit department. So the requirement is there for medium-sized companies. We are not talking about the startups, where absolutely there is no need for any internal audit work, but who are in operation and have a decent revenue of $10 to $25 million, they would like to get your services as an internal auditor. Great. Amna Said, I hope that provides clarity to your question. Now coming to our physical, participants. So I would like to open the floor for questions to them. We've catered to our online participants, and now I think it's time that we ask the people who are here physically with us if they have any questions for the panelists. Is the very high cost of licensed software. Yes, I think that there's one over here. Do we have a mic for him? My name is Fahim. Thank you very much for holding this session. We have been trying to reach the market in the competitions which we are facing from Philippines, Vietnam, India, and the overall the language, the accent of the people, how Pakistani people speak English is also a good big challenge for us as well. And being remotely here when we are delivering to them, and the time difference is also hurting us these issues. So can you please elaborate how to fix this? I think that's targeted more towards soft skills, right? Yeah. Anybody would like to So ask that? then simple is that you need to be part of the ICAP Toastmaster Club. That's a very good forum available from the ICAP platform. And otherwise, there are some short courses of 2 to 3 months available in the market where you can be a proficient in your communication. So you can go over there and learn. As one of the speaker or panelists said, that there has to be thirst. What do you want to achieve? To achieve that, you have to work hard and go for that. That's the simple solution. Yes. The Toastmasters, I think, is a great initiative actually, which our fraternity can make use of. एक एडवांटेज इस वर्ल्ड में पाकिस्तान में ये है कि हमारा एक्सेंट है ना बड़ा न्यूट्रल, उसका भी बड़ा एडवांटेज है. अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर मेहनत करते हैं तो एक्सेंट बड़ा न्यूट्रल होने की वजह से आपको बड़ा एडवांटेज मिलता है, बिकॉज कम्युनिकेशन जो है बड़ी फ्लुएंट हो जाती है. ये बड़ा एडवांटेज है. दूसरा क्वेश्चन टाइमिंग के हवाले से था, तो ऑब्वियसली दैट इज़, अगर आप नॉर्थ अमेरिकन मार्केट में काम कर रहे हैं तो लोग कस्टमर इज़ द किंग. कस्टमर के टाइमिंग को यू नीड टू कैटर फॉर. इसके अंदर मल्टीपल सोल्यूशंस निकाले हैं लोगों ने. ऐसी बात नहीं है कि सारे ही आउटसोर्सिंग जो है वो इन्हीं टाइमिंग में काम करती है. देयर आर डिफरेंट सोल्यूशंस विच वी अदर सर्विस प्रोवाइडर्स हैव मेड, but it depends which customer you are working for and which solution it works for. For example, there are certain service providers जिन्होंने इस तरह से जो है accounting services प्लान किया है कि there is 1/2 of overlapping working hours और बाकी टाइम जो है वो पाकिस्तानी टाइम के अंदर या लोकल टाइम के अंदर काम करते हैं, which gives an advantage to the customer की जो accounting work है या उनका जो काम है वो 24 hours चल रहा है. So they can put the work for you and they get off the work, और जब वो सुबह वापस आते हैं तो उनका काम को मिल चुका होता है, बिकॉज विद इन द डे यू हैव डन इट एंड यू हैव प्लेस्ड इन वॉट एवर द चैनल है वहाँ पे आपने उनको रख दिया. तो देयर आर डिफरेंट सोल्यूशन, बट देन अगेन डिपेंड ऑन किस कस्टमर के लिए आप क्या कर रहे हैं, क्या सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं और क्या सोल्यूशन उसके साथ जो है वो वर्कआउट. आई एग्री इसी तरह होता है.
And in most of our clients, I've talked about the real-time basis, meaning that it depends on the client to client. Sometimes they only work on a real-time basis for 3 to 4 hours, and then the some work homework, you can say the homework is given to the guy at around 12 midnight. Then you go and sleep, and first thing wake up in the morning, do these jobs in your timing, and then when we come and join the office 5 or 6 of our evening and their morning, this work is there for them. So I agree, इस मॉडल पे भी काम चलता है. Great. So we are running short of time. If the questions can be very precise. Yes. My question is about tax laws. Is there any difference between the tax laws of Pakistani and American? And my other question is about the language. You know, I was serving to an American and I was saying that as per this law. He said, what is as per? It is old British English. You need to talk to me in American English. लॉज के अंदर ऑब्वियसली हर कंट्री के अपने लॉज होते हैं, देयर इज अ डिफरेंस. बट जो चीज़ समझने की वो ये है कि हर चीज़ की जो स्पिरिट है या जो कॉन्सेप्ट है वो सिमिलर है. इनपुट आउटपुट टेस्ट का कॉन्सेप्ट आपके पास है तो वहाँ पे भी वैट के अंदर इनपुट आउटपुट टेस्ट द कॉन्सेप्ट्स आर सिमिलर. वंस यू नो योर लॉज तो इट्स नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और लर्न कि जी उस लैंड के ऊपर जो लॉ है वो किस तरह से वर्क करता है. जैसे आप बात दूसरी जो आपका क्वेश्चन है कि जी जो लैंग्वेज वाला है वो असद ने ये बात की कि कम्युनिकेशन इज़ द की. मैंने ये कहा था कि हर जोग्राफिक रीजन की अपने तौर तरीके हैं अपने नॉर्म से बात करने के. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर अंग्रेज़ी में आप बात करते हैं तो आप पूछेंगे हाउ आर यू. साउथ अफ्रीका में जाके वो बोलेंगे हाउ इज़ इट. तो हाउ इज़ इट और हाउ आर यू, आप हाउ इज़ इट क्या होता है. ठीक है, बट उनका अपना तरीका है हाउ आर यू बोलने का. जैसे हाउ इज़ इट, तो वो चीज़ें आपको जो है वो सॉफ्ट साइड है वो सीखने की ज़रूरी है, सो दैट दे फील कंफर्टेबल कि जी यू आर अमंग अस. ठीक है, एंड यू आर नॉट एन एलियन. तो जब वंस वो फील करेंगे आप एलियन है तो भी वो हर चीज़ में आपको एलियन समझेंगे. जी आपको लॉ भी नहीं आता होगा, आपको टैक्स भी नहीं आता होगा, आपको पेरोल का भी नहीं पता होगा. तो ये चीज़ें जो है उस पर मेहनत करने की ऑब्वियसली ज़रूरत है. एंड एज अ सेड कम्युनिकेशन Assimilation, I think, is very important in this aspect. So I think you had a question. Can we have the okay. अच्छा, नॉर्थ अमेरिकन मार्केट में कौन सी ज़्यादा फीजिबल है, यानी कि यूएस मार्केट पेनिट्रेट करने के लिए या कनाडा? और रेगुलेटरी अगर फ्रेमवर्क को देखें तो कहाँ पे कम रिस्ट्रिक्शन इजीली पेनिट्रेट कर सकते हैं? Asad, would you like to answer that? So there comes the technology gap. US market in terms of size काफ़ी बड़ी है. तो उस हिसाब से अगर आप क्वांटम देखें तो US market बड़ी है. लॉज रेगुलेशन दोनों के तकरीबन अच्छा ये टेक्नोलॉजी चलती है फिर टोरंटो का कुछ एरिया है यूएस में भी बहुत इम्पोर्टेंट यूएस सम ऑफ द कंपनी वेरी आउट यूएस मार्केट में जो वेस्ट पे जाते हैं टोरंटो से कैनेडियन थोड़े कंजर्वेटिव वैसे लोग हैं रिक्वेस्ट ऑन तो वो हो जाएगा. अब समझ ये दे आर वेरी ऑटोमेटिक थोड़े ओपन है. इवन ऑनेस्टली नो रिलेशन काफी कॉमन ग्लोबल कंपनी में मैंने थोड़े दे हैव एंड दैट इज वन एक्सेस जो हालांकि बड़े ऐसे सिस्टम पे गए हैं. हालांकि दोनों कॉस्टिंग सिस्टम या बजटिंग सिस्टम दैट इज फाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेल शीट एंड प्रोजेक्ट अकाउंट्स. तो ये मिथ है कि वो तो ये है ठीक है बजट है कि जो से लेवल पे जो सोचो but no, that's not the case. I read that as also last year. पॉइंट से भी ये है कि हम
hunger for learning is a reward. आप relate करना है अपने आप को Great. So one last question now because we're running short of time. Partly, very short response to the guy. Very crisp answer. For all the new entrants, my advice would be to tap the US market. It's more than 100 times than the Canadian market. They are quite familiar, their currency is strong, and they are very quick in decision making. As Asad said, Canadian market, these guys are very conservative. So it will be a waste of time and demotivating for the new starters. So you just concentrate and focus on US market. One last question because he's waited very patiently. My question is, we are focusing on freelancing and for LinkedIn. We are focused on like top 10 or remote jobs or crosswords. Can you please highlight how can we leverage them? So then I started asking them. Leveraging of services. Fahad, would you like to respond to that? वो कम्युनिकेशन के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है हम कोर अकाउंटिंग फाइनेंस के लिए नो मैटर मगर ये कम्युनिकेशन हमारा बहुत जरूरी है अनलेस यू आर ग्रूम्ड और ट्रेन्ड इन बिग फोर फर्म या खुद आपका कोई स्कूल या कॉलेज का एक्सपीरियंस अच्छा था हमारा कम्युनिकेशन दैट्स वन दूसरा लीडरशिप के लिए जैसे हम मिड ईयर लेवल पे रहते हैं ऊपर नहीं जा सकते नॉन उसका उनको हम कसूरवार ठहरा सकते हैं कि वो रेसिस्ट हैं जो बनी है but if you have that leadership and communication skill, I've seen those people who have those skills getting up the ladder very quickly. For business maybe it is very, very equally important. एक चीज सॉरी एक सवाल है ना सवाल मैनिफेस्ट करते हैं हमारे मैनेजर होता है वो प्रॉब्लम ये है सेल्फ रिजेक्शन बट अ जॉब नॉन कि क्लाइंट को ऑफर एक्सेप्ट हो जॉब और लोग जॉब क्लाइंट को रिजेक्ट कर एक्साइटिंग काम आप क्लाइंट के बिहाफ पे अपने आप को सर्विस रिजेक्ट फॉर्चून 500 फॉर्चून ये जो माइंडसेट हमें सही नहीं हुआ ये सब इक्वेशन है हमारे साथ भी बिल्कुल पीछे वो ये काम करते हैं तो सारा वही लेवल we are we system however उसका यहाँ पर ऑपरेशन की बात है जैसे आपकी बात कर रहे हैं at par है to the average उसके यहाँ पर सब सारा लेंगे मैंने जैसे कि ट्रांजेक्शन में कहा कि इसमें ये डेफिनेटली समथिंग बहुत वेरिफिकेशन के बाद समथिंग ऐड कर सकते हैं उसके अंदर इवन स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कि समथिंग से आपका टोरंटो की मिसाल जो केस नाम से लेकर your Toronto listed company in Chicago manufacturer multi-billion dollar revenue ASC 600 यूज कर रहा है तो 10 के जमाने का अपने यूज कर रहे हैं अपनी भांजी को सजाने के लिए यहाँ पर आज स्टोर है देखिए माउस नहीं चलता तो आप ये नहीं सोचते अपने आप को रिजेक्ट नहीं करते कि ब्रांड से रिजेक्ट लेकिन आप खुद से नहीं समझ के बैठ रहे हैं कि मुझसे नहीं होगा ये बहुत एडवांस चीज़ है Great. So now that brings us to the end of the panel discussion. We've really overrun the time allocated to us, and I'd like to put on record our sincere appreciation and gratitude to our members joining us from abroad, online, and those who are here with us physically. It's not short of mentoring. You all are like mentors to all these people who are now considering these opportunities and have such different questions in their mind. So it's like, commendable how you have spared time out of your busy schedules to come and mentor us fraternity members. So with that, over to you, Babar, and thank you everybody. Thank you. And with that, I'd like to add one more point. This panel discussion went on for more than an hour. So yes, we did learn a lot and it was very wonderfully put. And now this brings us to the close, but wait. For the panelists and the moderator, we do have a token of appreciation. So first, I would like to call Mr. Riaz Rahman Chamli on stage. And to present a memento to him, please welcome Chairman SRC, Mr. Osama Kapadia. and उसके थ्रू आप लोग कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, लीगली आप लोग ईमेल भी कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर स्टार्ट करना है Thank you, gentlemen. And next, for Mr. Danish Nurani, I would like to call Mr. Danish Nurani up on stage to receive his memento, and to give his memento to him, I would like to call Honorary Secretary of
Southern Region Committee, Sayyid Junaid Ali. Welcome both of them with a round of applause. And of course, every session needs a moderator, and for that, please welcome once again Ms. Muniza Osman Butt. And to present her the memento, please welcome Mr. Osama Rashid, also a member of the Southern Region Committee. And now for the closing remarks, please welcome fellow member of the Institute of Chartered Accountants Pakistan and council member Mr. Farooq Rahman for the closing remarks. Please welcome him with a round of applause. क्या आप एक छोटा सा भी SaaS का प्लेटफॉर्म बना के उसको ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पे डाल सकते हैं आपकी कंपनी अगर इसको आप मैं कुछ दिनों पहले भी यहाँ आया, कुछ करीब यही टाइम था और मैंने यही कहा कि बड़ी देर हो गई है तो आई हैव टू बी वेरी ब्रीफ और फिर मैं कोशिश करूँगा कि आई रिमेन विद लिमिट्स, बहुत जल्दी इस पर बात कर लूँ। इस टॉपिक के ऊपर तो जितनी भी बातें हुई हैं आई थिंक उसके बाद कुछ ऐड करने के लिए रियली कुछ रह नहीं गया है, बट मैं मोर ऑफ पॉलिसी साइड से जो है वो आई बीइंग अ काउंसिल मेंबर उस कॉन्टेक्स्ट में ज़रा बात करूँगा। मेरे अपने लिए आज आप सबकी तो CPD हो रही थी, साथ